to welcome you all to this great and special occasion of company's forthcoming IPO. Before we proceed with the conference, let me take this opportunity to introduce the management on the rise. From the company, we have with us Mr. Kamlesh Jain, who is the Chairman and Managing Director. We also have with us Mr. Mayank Parikh, who is the Joint Managing Director for the company. Last but not the least, we also have with us Mr. Hemant Shantilal Jain, who is the Executive Director and Chief Financial Officer for the company. Representing the BRLMs, we have with us Mr. Rajat Raval, who is Head Retail Syndication, ICICI Securities Limited. We also have with us Mr. Amish Patani, who is the Senior Vice President, Equity Capital Markets at DAM Capital Advisors Limited. Without wasting any further second of yours, let me now welcome Mr. Amish, Senior Vice President, Equity Capital Market at DAM Capital Advisors Limited, the BRLM for the issue, to kindly initiate the proceedings. Thank you so much for a very warm and a very powerful welcome. Thank you, sir, for coming on Saturday. I know it's our time, so we'll not take a lot of time. So, very good morning, gentlemen and ladies who's come for the Jain Metal IPO press meeting. So, the dais has already been introduced by sir, so I will not waste time on that. So, Jain Metal Group is engaged in the recycling as well as production of non-ferrous metal in India, and it is by far number one in the country. They are primarily focused on manufacturing of non-ferrous metal by way of recycling of non-ferrous metal scrap. They specialize mainly into lead, copper, aluminium. About the IPO size, the total IPO is 1,250 crore with a fresh of 500 crore and an OFS of 750 at the upper end of the price. The price band is between 220 to 232 with a bid of 64 equity shares. The IPO opens on Wednesday, which is 24th September, and closes on Friday, which is 26th September, and the anchor will be out on Tuesday, which is 23rd. So now may I invite the management? So please, one second. Thank you, Amishi. May I now, before we move on to the corporate presentation, I think the management is there. But prior to that, I would like to request my IT team to kindly play the AV. For thousands of years, in the relationship between man and his needs, nature has been playing a sacrificial role where men have been continuously mining its resources. And in today's world of depleting resources, the only way to sustainability is through recycling. Headquartered in the city of Chennai, including Kasthuri, with its recycling capacity of over 200,000 metric tons annually. Jain Metal Group has established itself as a pioneer in the recycling and production of non-ferrous metals in India. Actually, the group was started by my grandfather. The group is pioneer in non-ferrous metal recycling from several decades and have grown globally over the last 3 quarters of a century. Jain Metal Group is India's largest and fastest growing non-ferrous metal recycling business in terms of revenue for fiscal 2024, 2023 and fiscal 2022. With a rich legacy spanning 7 decades, the group primarily focuses on manufacturing of non-ferrous metal products, lead and lead alloy ingots, copper and copper ingots, and aluminium alloys. We are focused on ethical recycling. Recycling these metals instead of mining them reduces energy consumption and greenhouse gas emissions, aligning with international climate goals. The company has one of the largest battery breaking machines. The recycling facilities are equipped with equipment and systems which include high-capacity lead refining furnaces
Advanced technology leads smelting rotary furnaces, coreless and channel-type induction furnaces for copper melting, etc. The group has a laboratory accredited by the NABL for testing of lead, copper and aluminium in accordance with ISO/IEC 17025 colon. hedging mechanism. तो गुजराती भी आती मुझे गुजरात में अहमदाबाद में रहा हुआ है, पढ़ा हुआ है। Fine. Right guys, गुजराती क्योंकि 15-20 वर्ष नहीं है, so I don't know how capable I am to speak now Gujarati. So business में मैं Japan metals बनाई, like lead, copper, aluminium. So the biggest benefit हमारे लिए ये है कि बता metal LME and other exchange में hedge था ये। 7% स्टेक जो है वो वर्ल्ड ओवर होती है बाकी कंट्री, इसमें सिंगापुर है, चाइना है, यूएई है, ताइवान है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से वो विश्व स्तरीय क्वालिटी का होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा लगातार फोकस रहता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। तो हमारे यहाँ वेल डिफाइंड सिस्टम है, रॉ मटेरियल आता है उस स्टेज से लेके और फिनिश गुड्स। थोड़ी વધારે માહિતી આપું તો કંપની બેઝિકલી કોપર, એલ્યુમિનિયમ અને લીડ આ ત્રણ મેટલનું રિસાયકલ કરે છે। આખા વર્લ્ડથી મેટલ આપણે ઇન્ડિયામાં ચેન્નઈ ફેક્ટરી ઉપર મંગાવીએ છીએ અને એનું રિસાયકલ કરીને આખા વર્લ્ડમાં એક્સપોર્ટ કરે છે। તો મુખ્યત્વે ત્રણ જ મેટલ છે, કોપર, એલ્યુમિનિયમ અને લીડ। અને આ ત્રણેય વેલ્યુબલ મટીરિયલ છે અને આપણે જોઈએ તો આના બે જ રિસોર્સ છે, યા તો માઇનિંગ કરીને મેટલ નીકળે યા રિસાયકલ થાય। તો માઇનિંગ કરીને એક પ્રોસેસ છે, બીજું છે રિસાયકલ। આપણે રિસાયકલ કરીએ મેટલ આપણી ત્યાં આવે, આપણે વાયર, બેટરી અને બીજા ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટમાંથી આપણે મેટલને એક્સટ્રેક્ટ કરીએ છીએ, જેમાંથી કોપર નીકળે છે, એલ્યુમિનિયમ નીકળે છે, લીડ નીકળે છે, બેટરીમાંથી લીડ નીકળે, ટાયરમાંથી વાયર કાઢીએ છીએ અને એમાં કંપની વર્લ્ડના 10 મોટા પ્લેયરમાંથી છે। આઈપીઓની માહિતી આપું તો આઈપીઓ 24 સપ્ટેમ્બર અને આવતા બુધવારે સ્ટાર્ટ થશે। આઈપીઓ ક્લોઝ થશે 26 સપ્ટેમ્બર શુક્રવારે। 23 તારીખે એન્કર બુક પબ્લિશ થશે। આઈપીઓનો પ્રાઇસ બેન્ડ છે 220 રૂપિયાથી 232 રૂપિયા, 2 રૂપિયાનો ફેસ વેલ્યુનો શેર છે। આઈપીઓની સાઇઝ છે 1200 કરોડ, 1250 કરોડ, જેમાં ફ્રેશ ઓફર છે 500 કરોડનું અને 750 કરોડનું ઓફર ફોર્સેલ છે। યુઆઈબી 75%, એચએનઆઈ 15% અને રિટેલ 10%। થેન્ક યુ, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। नमस्कार, मॉर्निंग। आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में कंफर्टेबल है? कौन सी जगह चाहिए, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। तो मैं कमलेश जैन और मेरी टीम है यहाँ पे पारेख जॉइंट एमडी है, हेमंत सीएफओ है। तो मैं इस कंपनी के बारे में कुछ बताऊंगा आपको कि हमारी यूएसपी क्या है, क्यों इंडिया इज द किंग ऑफ रिसाइकलिंग एंड क्यों जेन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एंड द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया फॉर रिसाइकलिंग सेक्टर। रिसाइकलिंग होती क्या दोस्तों? रिसाइकलिंग इज लाइक आपके घर पे जो भी चीज़ होती है आप डेली यूज करते हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, आपके म्यूजिक सिस्टम, आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, इस सब की सडन लाइफ है। आफ्टर लाइफ बिकम एंड ऑफ द लाइफ फिर वो इक्विपमेंट बिकम वो अपना खंडन हो जाता है, उसको आपको करना पड़ता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब स्क्रैप नहीं। बहुत से लोगों के मन में एक भाई जो बहुत सी कमियाँ होती है, दे आर मेल्टिंग स्क्रैप, नॉट रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज वन स्टेप एयर ऑफ स्क्रैप मेल्टिंग, और ये रिसाइकलिंग मतलब मल्टी मेटल से आती है, एक मेटल उसमें इन्वॉल्व होता है। मान लो लैपटॉप जो पड़ा हुआ है उसके सामने उसमें खाली उसमें लेड या कॉपर या एल्यूमिनियम नहीं है, उसके अंदर प्लास्टिक, कॉपर, जिंक, गोल्ड की कोटिंग, सिल्वर, बहुत सी आइटम होती है। So recycling is one, is not about scrap metal, it is different
डिफरेंट फ्रॉम स्क्रैप मेटल, नंबर वन। रिसाइकलिंग सोर्स क्या है? रिसाइकलिंग सोर्स है एक एंड ऑफ द लाइफ में बताया आपको, दूसरा एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर आप अपने टाइम देखेंगे पास्ट में, तो पहले हम लोग यूज्ड टू हियर द म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम दी, हमारे पास में उस टाइम हमारे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, फिर हमारे पास में VCR, LD, DVD, CVD, फिर पेन ड्राइव, पता नहीं कितनी चीज़ें आई। वो सब चीज़ें वेस्ट हो गई। अभी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं मोबाइल पे, iTunes सुनते हैं, यूट्यूब सुनते हैं। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी खत्म होती है वो चीज़ें हो जाती है खराब, और वो चीज़ें खत्म होती है और लाखों टन, बिलियंस ऑफ टन माल बाहर आता है स्क्रैप रिसाइकलिंग करने के लिए। रिसाइकलिंग जरूरी भी है और कंपल्सरी भी है, मतलब इट्स वेरी अप्रॉफिटेबल। जरूरी क्यों कि इस दुनिया में रहना है, उस प्लैनेट रहना है, अगर रिसाइकलिंग नहीं होगी तो वी कैन नॉट लिव इन दिस प्लैनेट, द होल अर्थ बिकम द माउंटेन ऑफ गार्बेज। रिसाइकलिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और आज की तारीख में जो हम जो कर रहे हैं रिसाइकलिंग, मतलब ये नहीं कि लोगों को बनना है कि वेस्ट है वो चीज़ है, वो हम नहीं करते। आपकी जो प्लास्टिक वेस्ट होता है या म्यूनिसिपल वेस्ट है उससे हमारा कोई लेना नहीं, हमारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। बीच में एक सज्जन ने पूछा कि आप ये सब चीज़ें लेके आते हो तो वेस्ट जाने के पोल्यूशन होता रहेगा। हम जो करते हैं उससे पोल्यूशन होता नहीं, हम पोल्यूशन बचाते हैं। वी सेव एनवायरमेंट, वी हेल्प एनवायरमेंट एंड वी आल्सो प्रॉफिटेबल। सोशल सर्विस नहीं करते, चैरिटी नहीं करते, ऐसा भी बात है उसके अंदर। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया क्यों रिसाइकलिंग कर पा रहा है? इंडिया यूज पीसली है कि बिकॉज ग्लोबली दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल बिकॉज इट्स रिक्वायर ह्यूज मैन पावर। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो आप देखिए 1995 के अंदर में जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में आई तब क्या हुआ? उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर में इंफोसिस या टीसीएस बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए बड़ी बिकॉज इन कंपनियों के पास में कुछ इंडिया की यूएसपी थी, स्किल पीपल, यंग पीपल, मास लेबर सप्लाई और सस्ती वाली लेबर सप्लाई। इसलिए इंडिया में डेटा सेंटर या कोडिंग सेंटर, सॉफ्टवेयर सेंटर और भी जो सॉफ्टवेयर काम हुए बिकॉज ऑफ द इंडिया की यूएसपी। Recycling also कुछ उनका इंडस्ट्री है because it's same only. Software industry require huge manpower. Recycling also require huge manpower. और भी सस्ती वाली और मास इंडिया में अवेलेबल है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि टाइम के साथ में रिसाइकलिंग पता क्या होता है कि रीयूज ज़्यादा होता था। हमारे जमाने में एक एम्बेस में गाड़ी को हम 20 साल यूज कर सकते थे, और हमारा एक शर्ट या एक ड्रेस को पहने तो 5 साल। आज हम यूज एंड थ्रो मांगे हर चीज को, पर इंडिया में ध्यान नहीं। लेकिन अभी जैसे जैसे गाँव में tier 2 और tier 1 शहरों के अंदर में स्टैंडर्ड्स गोइंग, पीपल आर यूजिंग मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, यंग जनरेशन इज मोर यूजिंग यूज एंड थ्रो मोर, सो रिसाइकलिंग बढ़ रही है। इस वजह से रिसाइकलिंग बहुत बढ़ रही है। दस इस ग्रुप इज 75 years old group, but we are not doing this business from last 75 years. After my grandfather's brothers, father's brother, and then my own brother, different partition, in 2014 I became standalone. And तब मैंने ये बिजनेस चालू किया। हमारा हिस्ट्री है नॉन फेरस मेटल का। वी यूज्ड टू मेक कोल्ड रोल्ड शीट्स ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम और दैट्स आवर पास्ट बिजनेस। बट 10 साल पहले आफ्टर पार्टीशन आई स्टार्टेड दिस कंपनी 10 years back. In 10 years we built, me and my team has built India's largest recycling company, 2.5 times of first year and 5